Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper, that is your genetics, and this is your lecture number 35. And in this lecture we are going to discussing another topic, that is the extra chromosomal inheritance in case of pure Paramecium. But Paramecium रे आमे गुटे particles देखबार के पाइसु. One of that particle that is known as Kappa particle, which is found in its cytoplasm. Paramecium रो cytoplasm रे गुटे particles से जहाँ के कोई से Kappa particles, and that Kappa particles will transfer from one Paramecium to another Paramecium during their reproductive process that we have to discuss in this lecture. Okay, so let's start the discussion about this Paramecium रो तार Kappa particle रो inheritance बाबद रे discussion करबा. Okay, so here inheritance of Kappa particles. Inheritance of Kappa particles in Paramecium. Okay, so if you see the Paramecium, suppose I'm going to Paramecium देखमा, this is just looking like this. Okay, the Paramecium would more eukaryotic organism. Paramecium रे काना है से देखो, Paramecium रो इनो गुटे species बाबद रे हमें discussion करवा, that is Paramecium aurelia. In Paramecium aurelia, Paramecium aurelia इतर बाबद रे discussion करवा. Okay, Paramecium aurelia रे काना है से देखो, तार दुईटा type रो Paramecium देखबार के means दुईटा strain of Paramecium are there. There are two strains of Paramecium. There are, just wait, two strains. Okay, strains माने type. There are two strains or two types of Paramecium. दुईटा type रो Paramecium अच्छा. Okay, one strain that is known as your गुटे के कोई स्वामे killer strain, गुटे के कोई जैसे killer strain, and another one that is called as sensitive strain. Data strain of Paramecium are there. One is your killer strain, and another one that is your sensitive strain. Killer strain word ru jana paduche that can kill. Okay, and sensitive strain ro mane होला जे that can sense. काना के sense करी पारबा किछि substances that will release from the killer strain, and that substance will sense by the sensitive strain, and sensitive strain will die. काना कहला देखो, देखा गला जब when both of these strains are growing in same media, when both of these strains, दुही strain are grown in same media, grown in same media. Okay, जेतेले दुही strain ता समान media रे grow करूछन, देखा गला जे from the killer strain, from the killer strain रू काना होचे देखो, from the killer strain a toxin is released. A toxin is released to the media. Okay, हमें दुहीटा नला, killer strain भी नला और sensitive strain भी नला. But killer strain काना करूचे गुटे chemical release करूचे, केन के release करूचे से medium के release करूचे, but से medium रे किए होचे sensitive भी होचे, killer दुहीटा होचे. So it is found that then the sensitive strain die.
then the sensitive strain die. Sensitive strain काना करिगला तर डेथ हे गला का हेले जे बिकॉज़ किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन दुईटा जेतले ग्रो करछन किलर स्ट्रेन रो किछि केमिकल रिलीज होछ ओके एंड से केमिकल रो ना थिला और से टॉक्सिन रो ना थिला पारामेसिन से जिन केमिकल रिलीज करूछे से केमिकल रो ना हला पारामेसिन पारामेसिन बोली गोटे केमिकल रिलीज करूछे एंड से पारामेसिन केमिकल कहा के डेथ कर दोछे सेंसिटिव स्ट्रेन के डेथ कर दोछे सपोज एटा मोर किलर स्ट्रेन अच्छे एंड सपोज दिस वन दैट इज आवर सेंसिटिव स्ट्रेन अच्छे तो किलर स्ट्रेन दुहीटा एका संगे जेतेले ग्रो करूछन इनु काना बाहरुचे किछिटा केमिकल्स बाहरुचे जाहा के कहउछन पारामेसिन बोली करी कहउछु एंड पारामेसिन काना करूछे एतार डेथ करूछे ओके जहार नो रिलीज होउचे ताके हमें कहना किलर स्ट्रेन एंड जहार डेथ हे जाउचे ताके कहना सेंसिटिव स्ट्रेन ओके काना कहला जे पारामेसियम ऑरेलिया हैव two strains one is killer strain and another one that is your sensitive strain when both killer strain and your sensitive strains are grown in the same media from the killer strain there will be release of certain chemicals that is your paramecin and that paramecin will lead to death of the sensitive strain of the paramecium okay so it is found that जब killer strain जेतेले देखमा killer strain रे गोटे जीन अछि killer strain have a gene देखा गला जे killer strain रे गोटे जीन अछि ओके दैट इज योर के जीन बोली के नेला से जीन के नेला हमें के जीन ओके तो के जीन जेतेले देखा गला इन केस ऑफ योर किलर स्ट्रेन in killer strain generally the K gene that is present in homozygous dominant or heterozygous dominant condition. In killer strain, K gene is existing in dominant condition. Existing in dominant condition. केन कंडीशन रे एग्जिस्ट करूचे किलर स्ट्रेन रे के जीन टा डोमिनेंट कंडीशन रे एग्जिस्ट करूचे डोमिनेंट कंडीशन माने काना कैपिटल के स्मॉल के कंडीशन रे थाई पारे या फिर कैपिटल के कंडीशन रे थाई पारे ओके ई कंडीशन रे थाई पारे और ई कंडीशन रे थाई पारे डोमिनेंट कंडीशन रे होमोजाइगस कंडीशन हे पारे या फिर हेटेरोजाइगस इटा हला हमर होमोजाइगस इटा हला हमर हेटेरोजाइगस तार संगे संगे ओके एज वेल एज in its cytoplasm and in its cytoplasm तर cytoplasm में जितने देखमा there is presence of a particle there is presence of a particle but तर cytoplasm देखा गला जे सेन गोटे particle अछि that is called Kappa particle ओके तो हमर गोटे पारामेसियम टा किलर स्ट्रेन केते बेले होउचे जेते बेले के जीन टा डोमिनेंट कंडीशन रे थिबा तार संगे संगे सेतन गोटे तार साइटोप्लाज्म रे पार्टिकल्स थिबा व्हाट इज दैट पार्टिकल दैट इज द कापा पार्टिकल्स इफ बोथ ऑफ दिस कंडीशन occur then that will become a killer strain डोमिनेंट कंडीशन रे के जीन भी थिबार कथा तार संगे गोटे पार्टिकल थिबार कथा सेतर ना हला कापा पार्टिकल एंड दुही कंडीशन थिले जाकरी दैट स्ट्रेन ऑफ द पारामेसियम इज योर किलर स्ट्रेन अदरवाइज दैट इज नॉट किलर स्ट्रेन बुझी पारलो दुही कंडीशन नेसेसरी दरकार ओके तो इनु काना लेखमा जे फॉर ए किलर स्ट्रेन गोटे किलर स्ट्रेन जदी हबार अछि फॉर ए किलर स्ट्रेन both these conditions are required both these conditions should be present both these conditions should be present both these condition माने का एक नंबर
जे के जीन टा डोमिनेंट कंडीशन रे थिबार कथा के जीन डोमिनेंट कंडीशन रे थिबार कथा प्लस सेनो क्या पार्टिकल थिबार कथा गोटे पार्टिकल थिबार कथा कापा पार्टिकल ओके गोटे पार्टिकल थिबार कथा कापा पार्टिकल जदि कापा पार्टिकल नाइन ओके के जीन डोमिनेंट कंडीशन रे अच्छे बट जदि कापा पार्टिकल नाइन दैट इज नॉट किलर स्ट्रेन दैट बिकम सेंसिटिव स्ट्रेन ओके तो दुही कंडीशन नेसेसिटी होचे फॉर द टू बिकम ए किलर स्ट्रेन हबार लगी ताके होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रे रहबार जरूरी है तार संगे संगे गोटे पार्टिकल थिबार जरूरी है दैट इज द कापा पार्टिकल्स ओके देखो काना कहला देखो जे हमर गोटे किलर स्ट्रेन रो पैरामेसियम जदी हम देखमा सपोज दिस इज द पैरामेसियम हला ओके इतर न्यूक्लियस के जते बेला में देखमा तर न्यूक्लियस रे काना प्रेजेंट थिबार कथा के जीन ता डोमिनेंट कंडीशन रे थिबार दरकार कैपिटल के सपोज नला ओके तार संगे संगे तार साइटोप्लाज्म रे काना थिबार कथा गोटे पार्टिकल दिस इज दैट पार्टिकल दैट इज योर कापा पार्टिकल साइटोप्लाज्म रे काना थिबार कथा कापा पार्टिकल ओके दिस इज योर कापा पार्टिकल ओके एंड इटा डोमिनेंट केजिन इटा भी डोमिनेंट केजिन दुईटा डोमिनेंट केजिन अछि माने होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रे अछि होमोजाइगस डोमिनेंट केजिन माने कैपिटल के लिखी छे और पैरामेसियम रे आउ केन कंडीशन थाई पारे ओके इटा मन करता न्यूक्लियस हला इटा कैपिटल के हला एंड दिस वन दैट इज योर स्मॉल के हला ओके दैट मींस हेटेरोजाइगस कंडीशन रे भी थिबा बट तार संगे दरकार ताके काना कापा पार्टिकल्स टू बिकम ए किलर स्ट्रेन हमार लगी ताके आउ काना दरकार कापा पार्टिकल्स भी दरकार ओके तो इटा केन कंडीशन रे अछि हेटेरोजाइगस कंडीशन रे अछि ओके तो दुही कंडीशन हेले जाई करी होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस दुही कंडीशन थिबार कथा जेनसिटा हो गुटे कंडीशन थिबार कथा तार संगे संगे तार पाखे काना थिबार कथा कापा पार्टिकल इफ द कापा पार्टिकल इज एब्सेंट देन दैट बिकम द सेंसिटिव स्ट्रेन और इफ डोमिनेंट कंडीशन इज नॉट देयर देन इट विल बिकम द सेंसिटिव स्ट्रेन तो डोमिनेंट कंडीशन भी दरकार कापा पार्टिकल्स भी दरकार तार साइटोप्लाज्म तो एबे तमर माइंड वन को चलु थबा व्हाट इज दिस कापा पार्टिकल ना सो कापा पार्टिकल्स बाबत रे टिके नॉलेज आनी जमा लेट्स सी हियर व्हाट इज दैट कापा पार्टिकल्स ओके देखो कापा पार्टिकल्स देखा गला जो पहला इनिशियली दिस कापा पार्टिकल्स दैट आर जस्ट कंसीडर्ड एज सेल रो किछि ऑर्गेनेल बोले कि कंसीडर करा जाउतला एट फर्स्ट but later on these are not proved that these are not your cell organelle these are the bacteria paramecium रो भितरे एंडोसिम्बायोटिकली किछि बैक्टीरिया तार भितरे प्रेजेंट अछन राइट काना कहला initially these kappa particles are considered as cell organelle सेल ऑर्गेनेल हिसाब से कंसीडर करा जाउथिला पहला बट लेटर ऑन these are proved as bacteria okay later on these are proved as bacteria ओके देखो पहला जते बेले कापा पार्टिकल्स से देखा गला ये कापा पार्टिकल्स के काना बोलते दीज आर सम सेल ऑर्गेनेल सेल रो भीतर साइटोप्लाज्म रो अछि तो सेल ऑर्गेनेल हेतिबा
but pore jana palla je nahi, this is not the cell organelle, this is bacteria, right? And kin bacteria, that is a gram negative bacteria. This is a gram negative bacteria. And se bacteria ro na hoche pseudobacter Tuniospiralis. Pseudobacter spiralis, Tuniospiralis. এটা গোটে ব্যাকটেরিয়া তার ভিতরে আছে, দ্যাট ইজ ইউর কাপা পার্টিকল। ওকে, এনি ব্যাকটেরিয়া পাখে গোটে body আছে, গোটে রড শেপ র স্ট্রাকচার আছে, দ্যাট ইজ কল্ড এজ R bodies. Any R body he actually that helps in the toxin, that helps in toxin delivery. जेन टॉक्सिक मटेरियल जेन बाहरु छे, से टॉक्सिक मटेरियल रो डेलिवरी रो लागि गोटे पार्टिकल्स से तार भीतर ताके कहू आर बॉडीज बोली करी कहू से आर बॉडीज रो लागि बोली करी तार भीतर टॉक्सिन बाहरु छे। ओके, this R body that is found inside the gram negative bacteria, and gram negative bacteria ken gram negative bacteria, that is your pseudobacter Tuniospiralis, and that is considered as kappa particles, ताके कहू हमें kappa particles, but sensitive strand रे काना नै न kappa particles नै न, यदि kappa particles नै न then सेनो R body नै न, R body यदि नै न सेनो toxin रो delivery नै हबार, toxin रो removal नै हबार। टॉक्सिन डेलिवरी माने काना, जे टॉक्सिन ता तन जेन डेलिवर होचे, रिलीज करूचे तार बाहर मीडिया निके ताके कोसन टॉक्सिन डेलिवरी बोली करी कहसु, राइट? बट यू नो असला अनदर कांसेप्ट जे हमर जन के जीन अच्छे डोमिनेंट कंडीशन रे, इन डोमिनेंट कंडीशन के जीन दैट मेंटेन दिस kappa particle और R bodies, इजन R bodies रो मेंटेनेंस अच्छे और इजन pseudobacter Tuniospiralis अच्छे और kappa particle जहा के कहूछु kappa particle रो मेंटेनेंस एक्चुअली के करसे डोमिनेंट के जीन, बट डोमिनेंट के जीन kappa particle फॉर्मेशन नहीं करबार, kappa particle इज बैक्टीरिया, बट ई बैक्टीरिया रो मेंटेनेंस के करूछे डोमिनेंट के जीन करूछे, राइट? सो दैट डोमिनेंट के जीन मेंटेन, डोमिनेंट के जीन maintain the kappa particles. Kappa particles रो मेंटेनेंस एक्चुअली करसी के, दैट इज डोमिनेंट केस। तो डोमिनेंट कंडीशन रे थिबार जरूरी है, तार संगे संगे kappa particles भी थिबार जरूरी है paramecium रे, then that paramecium will be considered as your killer strain, right? बट काना ऐसे देखो जते बेले रिप्रोडक्शन एसी paramecium रे जेन रिप्रोडक्शन एसी दैट इज कॉल्ड योर कंजुगेशन, जेन लगे बैक्टीरिया रे में डिस्कशन करथिमा, गुटे बैक्टीरिया पक्के एसी तार भीतर गुटे कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन एसी, सेनो गुटे बैक्टीरिया रो प्लाज्मिड आ गुटे बैक्टीरिया ने के ट्रांसफर एसी फर्स्ट सेमेस्टर रे थिला, राइट? जस्ट लाइक दैट paramecium जते बेले रिप्रोडक्शन करूची, when paramecium undergoes reproduction, जेते बेले paramecium ता रिप्रोडक्शन करूची बाय कंजुगेशन, कहार द्वारा रिप्रोडक्शन करूचे, कंजुगेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करूचे। ओके, सो paramecium reproduce by conjugation method, and conjugation method रे काना ऐसे देखो, suppose this one that is our killer strain माने करला हला, and suppose this is the sensitive strain हला। ओके, तो killer strain रे हमर केन कंडीशन थिबा, डोमिनेंट के दुईटा के माने को डोमिनेंट के नै गला, तो आरन काना थिबा रिसेसिव जीन थिबा, तो इनो स्मॉल के, ओके, एटा रिसेसिव के जीन है,
recessive K gene. Duita recessive K gene on. But these two are the dominant K gene. Dominant K gene. But you know, our kana achis killer strand re, but a particle achis, that is your kappa particle. So these are the kappa particles. Okay, but here the kappa particle is absent. So it is our kana, that is your killer strand. This is our killer strand. And this is our sensitive strand. देखो जते बेले हमर पारामिशियम जते माने पक्के पक्के आसन इमानकर भितरे काना फॉर्मेशन है गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टे फॉर्मेशन है इमानकर भितरे गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टे फॉर्मेशन है एंड से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के कहा जैसी दैट इज कॉल्ड एज योर कंजुगेशन ट्यूब बोली करी कहा जैसी देखो सपोज दिस वन दैट इज योर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड ये ट्यूब के कहसो हमें कंजुगेशन ट्यूब बोली करी कहसो ओके तो कंजुगेशन ट्यूब देखरी कहां ऐसे जनरली इतर साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस अच्छे न्यूक्लियर मटेरियल अच्छे इमनकर कहां ऐसे आदान प्रदान ऐसे एक्सचेंज ओके सो ड्यूरिंग कंजुगेशन the nuclear material as well as your cytoplasmic material exchange between the two paramecium but okay first let me write here काना कहला जे during conjugation time रे the nuclear material माने न्यूक्लियस रो भितरे जहा আছে the nuclear material as well as cytoplasmic material are exchanged even exchanges nuclear material as well as cytoplasmic material दुहीटा कनेक्शन exchanges केन टाइम रे जेतले conjugation हो बट नो क्वेश्चन असला ओके जे हमर conjugation रो टाइमिंग काना जदि हमर conjugation that is less than 3 minutes हबा काना कहला if conjugation occurs less than 3 minutes if conjugation occurs for less than 3 minutes 3 मिनिट रु जदि कम हैला कंजुगेशन टा जदि 3 मिनिट रु कम हैला काना हबा ओनली न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज only nuclear material will exchange material will be exchanged and cytoplasmic material will not exchanged cytoplasmic materials will not be exchanged देखो यदि लेस देन 3 मिनिट हवा खाली न्यूक्लियस रो मटेरियल खाली एक्सचेंज हवा इतर न्यूक्लियस रो मटेरियल सतर निके सतर टाइप तर निके आसीबा बट साइटोप्लाज्म आजा जाना करी नहीं पारे केते बेले यदि कंजुगेशन होचे लेस देन 3 मिनिट बट अनदर कंडीशन असला इफ कंजुगेशन occurs for more than 3 minutes for more than 3 minutes 3 मिनिट रु जदि अधिका कंजुगेशन हुए से केस रे बोथ न्यूक्लियर मटेरियल as well as cytoplasmic material get exchanged cytoplasmic materials get exchanged न्यूक्लियर मटेरियल भी एक्सचेंज है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी एक्सचेंज है जदि मोर देन 3 मिनिट्स तक कंजुगेशन है तो काना हबा देखो जदि लेस देन 3 मिनिट हला सपोज दिस इज योर किलर स्ट्रेन हला
and this is your sensitive strand hela. Okay, मनकर भितरे conjugation hela, but it time रे देखला जे इटा काना हला that is less than 3 minutes, less than 3 minutes जेतेले less than 3 minutes इ कामटा हवा इ टाइम रे काना हवा देखो इन हमर काना थिला dominant के. ओके, dominant के थिला एंड इन small के अच्छा गोटे दुईटा अलग अलग कलर कर दो. स्मॉल के माने कर अलग कलर टा ना सपोज ग्रीन कलर. दिस वन दैट इज योर स्मॉल के लेस देन 3 मिनिट हला न्यूक्लियर मटेरियल खाली एक्सचेंज हबा. माने सपोज ई के जीन टा यार के आसी गला एंड के जीन टा यार के पले आसला. ओके, सो दैट वी विल गेट टू पारामेशियम. दुटा पारामेशियम में भी हमको मिलवा खाली कहार एक्सचेंज है न्यूक्लियर मटेरियल रो एक्सचेंज है. कहार एक्सचेंज नहीं है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल रो एक्सचेंज नहीं है. तो इन डोमिनेंट के जीन टा प्लेस छे इतर निके. डोमिनेंट के जीन टा प्लेस छे एबे इतर निके एंड आरो डोमिनेंट के जीन टा जेन जगह रे थिला से जगह रे अछि. बट रिसेसिव के जीन प्लेस छे इतर निके. So that we will have the recessive case in here and another recessive case in agru thila. बुझियला. तो एबे agru हमर इतर पखे काना थिला agru इतर पखे kappa particles थिला. This one that is your kilostring थिला. इतर पखे still kappa particles अछि but less than 3 minute जदी हबा साइटोप्लाज्म इतर मनकर दुई जनकर भितरे एक्सचेंज ना हमार खाली न्यूक्लियर मटेरियल. सो दैट जीन रो खाली एक्सचेंज हला बट kappa पार्टिकल जेन बैक्टीरिया थिला सही बैक्टीरिया रे अछि. देखो एबे ई बैक्टीरिया के देखो दिस वन दैट इज योर किलर स्ट्रेन. आगुरु भी किलर थिला एबे भी से किलर स्ट्रेन का ही अछि. आगुरु ई थिला किलर ई थिला सेंसिटिव. ओके, किलर थिला ई किलर रहला, सेंसिटिव थिला ई भी सेंसिटिव अछि. बट इनो देखो के जिन इनो केन कंडीशन रे अछि हेटेरोजाइगस कंडीशन रे अछि. के जीन हमर केन कंडीशन रे अछि हेटेरोजाइगस कैपिटल के एंड स्मॉल के कंडीशन रे अछि. कैपिटल के एंड स्मॉल के कंडीशन रे अछि. ओके, इनो भी कैपिटल के और स्मॉल के कंडीशन रे अछि. दुईटा कैपिटल के स्मॉल कैपिटल के स्मॉल के कंडीशन रे अछन बट दिस वन इज योर किलर स्ट्रेन बट दिस वन इज योर सेंसिटिव स्ट्रेन. व्हाई? बिकॉज़ इनके हुए तो डोमिनेंट के जीन आसीचे बट kappa particles नहीं आसी. kappa particle हेले जेकरी डोमिनेंट जीन सतके मेंटेनेंस करबा एंड दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स. बट हियर kappa particles नहीं आसी ओनली काना आसीचे डोमिनेंट के जीन पले आसीचे. स्टिल जेंटा थिला मोर सेंसिटिव से सेंसिटिव हेकरी ही अछि. जदी कंजुगेशन होचे दैट इज फॉर द लेस देन 3 मिनट बट जदी कंजुगेशन हला दैट इज मोर देन 3 मिनिट्स काना हवा. लेट्स सी हियर सपोज दिस वन दैट इज योर paramecium. Okay, and here this one is your sensitive strand. Okay, इमनकर भितरे कंजुगेशन हला बट इमनकर भितर जन कंजुगेशन हला दैट इज मोर देन 3 मिनिट्स. दैट इज फॉर मोर देन 3 मिनिट्स. मोर देन 3 मिनिट्स जते बेले होउछे इन हमर काना थिला डोमिनेंट के थिला. ओके, एंड हियर स्मॉल के थिला स्मॉल के बट इनो क्या पार्टिकल्स थिला kappa particles माने थिला. these are the kappa particles but more than 3 minutes जते बेले होचे suppose this one that transfer to this and this one that transfer to this तार संगे संगे kappa particles माने भी काना करि पारबे ट्रांसफर ही पारबे जदि कंजुगेशन होचे that is for more than 3 minutes. Right, so here after that we will get two strand of the bacteria two strand of your paramecium
तापर सेपरेट हो गले दुईटा आफ्टर कंजुगेशन हो साला पर दुईटा सेपरेट हो गले बट लेट्स सी नाउ एबे इतर पक्के जी देखमा फर्स्ट देखो इतर पक्के डोमिनेंट के जीन गुटे अच्छे और सियाडू रिसेसिव के जीन आसीचे रिसेसिव के जीन अच्छे आरन भी रिसेसिव के जीन अच्छे ओके इनो कपा पार्टिकल्स थिला किछि जाइचे से आड़ के बट स्टिल इतर पक्के कपा पार्टिकल्स अच्छे एंड यार के भी आसीचे सो दैट हियर आल्सो कपा पार्टिकल्स आर देयर इनके भी कपा पार्टिकल्स आसी गला जेतले मोर देन 3 मिनिट्स कंजुगेशन हला एंड तार संगे संगे इतर पक्के केजिन इनो डोमिनेंट केजिन आड़ के आसीचे सो द डोमिनेंट केजिन अछि ओके हियर डोमिनेंट केजिन कहा के रेगुलेट करसी कपा पार्टिकल्स मान को मेंटेनेंस करसी डोमिनेंट केजिन ई कपा पार्टिकल के मेंटेन करबा डोमिनेंट केजिन इतर कपा पार्टिकल्स मान को मेंटेन करबा सो दैट दिस कैन रिलीज सर्टेन केमिकल्स as well as this will also release certain chemicals तो ही जने यहाँ chemicals release करी पारबे क्या chemicals that is your paramecium that means now this is इतो आगरु killer थिला but this one that is now converted into killer strain आगरु थिला काना this one only killer strain रा इटा खाली killer थिला इटा थिला sensitive but एबे killer टा killer हिसाबे अच्छे but this one that is your sensitive sorry किलर टा किलर हिसाब अच्छे बट जेनटा सेंसिटिव थिला सेटा एबे काना हे गला किलर हे गला ओके तो हमें गोटे किलर स्ट्रेन और गोटे सेंसिटिव स्ट्रेन भितरे जदी लेस देन 3 मिनिट रो कंजुगेशन करमा तो किलर स्ट्रेन विल रिमेन किलर स्ट्रेन एंड सेंसिटिव स्ट्रेन विल रिमेन सेंसिटिव स्ट्रेन एंड इफ वी conjugate between the killer strain and the sensitive strain for more than 3 minutes then the killer strain will remain killer strain but the sensitive strain will convert it into killer strain because here the cytoplasm can also transfer from one paramecium to another paramecium this is the cytoplasmic inheritance in case of your paramecium that is about the kappa particles बुझी पारला कि नहीं पारला so let me write just complete कर दो notes टा so काना कहला when the conjugation occurs when the conjugation occurs between a killer strain and a sensitive strain for less than 3 minutes less than 3 minutes यदि हमें conjugation करूं then the killer strain will remain killer strain टा killer strain हिसाब ही थिबा the killer strain will remain killer strain okay and the sensitive strain also remains sensitive strain okay जदि less than 3 minutes करिथमा but जदि more than 3 minutes करबा if the conjugation occurs for more than 3 minutes then the sensitive strain will become काना हे जिबा किलर स्ट्रेन हे जिबा okay so this is all about your inheritance of the kappa particles or the cytoplasmic inheritance in case of your kappa particles of the paramecium
right? The paramecium ro kappa particles ro kentakari cytoplasmic inheritance hoche that we have discussed here. If any doubt, you can write to us. Our chat box is ready for all of you. That is 24 into 7 hours that is open for all of you. Okay, any doubt, you can write to us. I will try to rectify all of your problems. Thank you. You may enjoy this session. Thank you.